Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are hale and healthy. And I hope you have completed the previous 3 chapters till lecture 22. So let's start today lecture 23 and a new chapter that is of advanced granulation technology. As far as granulation technology is concerned, you might have studied the granulation processes and the equipments necessary for granulation processes in your 4th year of PharmD, probably in your 2nd semester. So we'll be continuing the discussion in terms of advanced techniques in this year. Prior to starting the details of the advanced granulation processes, I would like to introduce you to the topic, although you might have learned it previously, but we need a revision of it. So we'll be starting with the introduction to granulation first. For this lecture, I would be directly referencing Handbook of Pharmaceutical Granulation Technology that I have already provided to you. And you can actually refer it back to the book that has been already provided to you. So we'll be continuing our discussion in detail from the book only. So Perry's Chemical Engineering's Handbook defines the granulation process as any process whereby small particles are gathered into larger permanent masses in which the original particles can still be identified. This definition is of course particularly appropriate to pharmaceutical granulation, where the rapid breakdown of agglomerates is important to maximize the available surface area and aid in solution of the active drug. So कोई भी process जिसमें small particles को gather करने के बाद उसे लार्जर और परमानेंट मासेस के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाए, जहाँ पर ओरिजिनल पार्टिकल्स आइडेंटिफाई हो सकें, वो ग्रैनुलेशन प्रोसेस कहलाता है। इस डेफिनेशन को हम फार्मास्यूटिकल ग्रैनुलेशन के पर्सपेक्टिव में अप्रोप्रिएट कह सकते हैं, बिकॉज जो भी एग्लोमेरेट फॉर्म होगा अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, वो it would be broken down into स्मॉल साइज पार्टिकल्स में जब ब्रेक होगा तो एक सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगा which would aid in solution of the active drug. The term granulated material is derived from the Latin word granulatum, meaning grained. The granulated material can be obtained by direct size enlargement of primary particles or size reduction from dry compacted materials. Granulated material की term derive हुई है Latin word से, which is called as granulatum, जिसका मतलब है grained. Granulated material को हम obtain कर सकते हैं by direct size enlargement of primary particles से, या फिर size reduction से dry compacted material में. साइज एनलार्जमेंट हम मोस्टली वेट ग्रैनुलेशन में कर रहे होते हैं, जहाँ पर हम ग्रैन्यूल्स स्मॉलर पार्टिकल्स को वेटिंग के थ्रू लार्जर पार्टिकल्स में कन्वर्ट करके ग्रैन्यूल्स फॉर्म कर रहे हैं। साइज रिडक्शन अगर करते हैं ड्राई कॉम्पैक्टेड मटेरियल की, उस सूरत में जब हमारे पास रॉ मटेरियल मौजूद होता है, लाइक इन केस ऑफ सॉल्ट्स विच आर अवेलेबल इन क्रिस्टलाइन लैटिस स्ट्रक्चर, उन्हें स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक करते हैं और स्मॉल ग्रैन्यूल्स अटेन होते हैं। तो ग्रैनुलेशन कैन ईदर बी डन बाय डायरेक्ट साइज एनलार्जमेंट ऑफ प्राइमरी पार्टिकल्स या फिर साइज रिडक्शन फ्रॉम ड्राई कॉम्पैक्टेड मटेरियल्स। The development of pharmaceutical granulation was driven by the invention of the tablet press by W. Brockton in 1843. Subsequent improvements in the tablet machinery were patented in the United States by J.A. McFerrin in 1874 and T.G. Young in 1874 and D.G. Dalton in 1876. So all these scientists actually improved the tablet press machine into a specific tableting machine, and the demands on the granulation properties were further enhanced in 1970s
as high-speed tablet and capsule filling machines with automated controls were introduced. The continuous refinements in the regulatory requirements such as low-dose products requiring blend uniformity, content uniformity necessitated knowledge and technology to provide the required granule characteristics. The high-speed compression and capsule filling machines require a uniform flow of material to the dyes or filling stations that produce pharmaceutical dosage forms. Pharmaceutical granulation की development is way back in 1843 जब टैबलेट प्रेस से टैबलेट्स फॉर्म की जाती थी या ग्रैन्यूल्स फॉर्म किए जाते थे. इन्हीं टैबलेट प्रेस में जब सब्सिक्वेंट इम्प्रूवमेंट्स स्टार्ट हुई तो टैबलेट मशीनरी आना स्टार्ट हुई और इनिशियली टैबलेट मशीनरी सबसे पहले पेटेंट हुई थी 1874 में. उसके बाद उसकी इम्प्रूवमेंट और ज़्यादा बढ़ती गई जैसे जैसे डिमांड्स ग्रैनुलेशन प्रॉपर्टीज़ की इंक्रीज़ होती गई. 1970s में हाई स्पीड टैबलेट और कैप्सूल फिलिंग मशीन्स लॉन्च हुई थी ऑटोमेटेड कंट्रोल्स के साथ. इन्हीं ऑटोमेटेड कंट्रोल्स के साथ जो हाई स्पीड टैबलेट मशीन्स हैं और कैप्सूल फिलिंग मशीन्स हैं इनकी कंटिन्यूस रिफाइनमेंट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जैसे जैसे होती गई, जैसे हमें लो डोज प्रोडक्ट्स में ब्लेंड यूनिफॉर्मिटी और कंटेंट यूनिफॉर्मिटी और इसके अलावा उसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स जिसमें ग्रैनुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होने चाहिए इसकी इम्प्रूवमेंट आती गई. इसी तरह से हाई स्पीड कंप्रेशन और कैप्सूल फिलिंग मशीन्स में यूनिफॉर्म फ्लो की रिक्वायरमेंट बढ़ती गई और इसी यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ मटेरियल को जो फ्रॉम द डाई टू द फिलिंग स्टेशन है फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म में मेंटेन करने के लिए इन सारी मशीनरी या इन सारे इक्विपमेंट्स के अंदर डेवलपमेंटल प्रोसेसेस के थ्रू डेवलपमेंट होती गई और इनमें फर्दर इन्हांसमेंट होती गई. So, granulation is an example of particle design. Desired attributes of the granule are controlled by a combination of the formulation and the process. Granulation methods can be divided into two major types, that is wet methods, जिनको भी मैंने explain किया, which utilize some form of liquid to bind the primary particles, and dry methods which do not utilize any liquid. Granulation particle design की एक example है और इसमें ग्रैन्यूल के जो डिज़ायर्ड एट्रीब्यूट्स हैं उनको कंट्रोल किया जाता है बाय कम्बिनेशन ऑफ फॉर्मुलेशन और उसके प्रोसेसेस से. ग्रैनुलेशन मेथड्स को हम ब्रॉडली दो मेजर टाइप्स में डिफाइन कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं. एक ग्रैनुलेशन इज वेट ग्रैनुलेशन मेथड एंड द अदर इज ड्राई ग्रैनुलेशन मेथड. वेट ग्रैनुलेशन में देयर इज अ नीड ऑफ अ लिक्विड जो बाइंडिंग करेगा प्राइमरी पार्टिकल्स की, एंड ड्राई मेथड्स में इट डू नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ लिक्विड इन इट. सो there are two types of granulation techniques. One is batch technique and the other one is continuous technique. These both techniques utilizes two different types of granulation equipment. Batch technique again utilizes mechanical as well as fluid beds, and same is the case with the continuous granulation techniques. It utilizes mechanical as well as fluid beds. In batch technique, mechanical granulators are further subdivided into low shear granulators or high shear granulators or rotary granulators. Whereas in continuous technique, the mechanical granulators are further subdivided into mixers and extruders and roller compactors. The continuous technique also contains another technique which is called as spray dryer or spray drying technique. So these are the techniques, some of which we are going to discuss in this semester, and some of them you have already learned in your previous sessions. दो तरह की ग्रैनुलेशन टेक्निक्स हैं जिन्हें यूटिलाइज किया जाता है ग्रैनुलेशन के लिए. एक बैच टेक्निक कहलाती है और दूसरी कंटिन्यूस टेक्निक कहलाती है.
बैच टेक्निक में 2 टाइप के मेजर ग्रैनुलेटिंग इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं, जिनमें से वन इज़ कॉल्ड एज मैकेनिकल ग्रैनुलेटिंग इक्विपमेंट और दूसरे फ्लूइडाइज्ड बेड्स कहलाते हैं. This fluid bed has the capability to actually operate more than one or two processes in a single granulation step. Mechanical granulators जो बैच टेक्निक में यूज़ होते हैं, they can be further categorized into low shear granulators or high shear granulators or rotary granulators. जबकि कंटिन्यूस टेक्निक के अंदर हमारे पास जो मैकेनिकल ग्रैनुलेटर्स हैं, दे कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू मिक्सर्स, एक्सट्रूडर्स और रोलर कॉम्पैक्टर्स. कंटिन्यूस टेक्निक के अंदर एक तीसरी टेक्निक भी यूज़ होती है, या तीसरा टाइप का ग्रैनुलेटर भी यूज़ होता है, जिससे हम स्प्रे ड्रायर कहते हैं या इसको स्प्रे ड्राइंग टेक्निक कहते हैं. So we'll be starting our lecture with this particular technique, and we'll further move to roller compactors and rotary granulators and so on. The classical granulation process using either wet or dry methods is employed in the process industries. Pharmaceutical granulation process is used for tablet and sometimes capsule dosage forms. However, in some applications, the process is used to produce spherical granules for the modified release indications, or to prepare granules as sprinkles to be used by pediatric patients. In some countries like Japan, having granulated product in a sachet is acceptable where a large dose of the drug product is not suitable for swallowing. Granulation process जिसमें या तो वेट या ड्राई मेथड एम्प्लॉय होगा, प्रोसेस इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है. Pharmaceutical granulation processes mostly tablets और sometimes capsule dosage forms के लिए यूटिलाइज होते हैं. इसके अलावा फार्मास्यूटिकल ग्रैनुलेशन प्रोसेसेस को यूटिलाइज किया जाता है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस स्फेरिकल ग्रैन्यूल्स. स्फेरिकल ग्रैन्यूल्स में मोस्टली स्फेरिकल ग्रैन्यूल्स उस वक्त सिंथेसाइज किए जाते हैं जब हमें मॉडिफाइड रिलीज्ड डोजेज फॉर्म में ग्रैन्यूल्स को कन्वर्ट करना होता है, या फिर हमें ग्रैन्यूल्स को एज ए स्प्रिंकल एडमिनिस्टर करना होता है इन केस ऑफ पीडियाट्रिक पेशेंट्स. कुछ कंट्रीज़ के अंदर ग्रैन्यूल्स सैशेट्स की फॉर्म में भी अवेलेबल होते हैं, जहाँ पर लार्ज डोजेस ड्रग प्रोडक्ट्स की सूटेबल नहीं होती स्वेलिंग के लिए. वी ऑल्सो डू हैव सम प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन सैशेट्स ऑफ ग्रैन्यूल्स. I'll just quote an example of an effervescent drug product which is called as Eno, is available in the form of effervescent granules in a pack of sachet. So the reason for granulating a pharmaceutical compound are as follows. Number one is to increase the uniformity of drug distribution in the product, to densify the material, to enhance the flow rates and rate uniformity, and to facilitate metering or volumetric dispensing, to reduce the dust and to improve the appearance of the product. Granulation के different reasons हैं. 6 main reasons are enlisted over here. Number 1, uniformity और drug distribution को increase करने के लिए granulation is done. Material की density को increase करने के लिए या material को densify करने के लिए granulation की जाती है. In order to enhance the flow rates and rate uniformity, granulation is an appropriate thing to do. To facilitate the metering or volumetric dispensing, granulation helps a lot. Dusting को reduce करने के लिए during formulation या during processing, जहाँ पर particle dusting होती है due to the very small size of particles, अगर हम उन small size particles को larger agglomerates में convert कर दें तो we may avoid dusting. इसमें बहुत सारे ऐसे drug ingredients होते हैं which are not suitable for health for the person who is actually operating the machine or equipment. तब एक necessary factor है in order to avoid the dosage reduction
या फिर कंटेंट यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करने के लिए भी डस्ट को रिड्यूस करना ज़रूरी होता है. So a smaller size particle can be converted into a larger size particle by the help of a granulation process, and it may avoid dusting. To improve the appearance of the product, granulation is a technique which actually enhances the appearance of the product. There are 5 primary methods which exist to form an agglomerated granule. They are formulation of solid bridges, sintering, chemical reaction, crystallization or disposition of colloidal particles. Here in this diagram you can see the mechanisms of agglomeration. First, the spraying or blending with the binder and powder is done. Binder droplets and powder combine and they are actually wetted together. Here you can see these blue lines are the droplets of the binder, and these are powder particles. They are joined together or lightly joined together by wetting. Once this wetted part or the droplet part is dried with drying technique or solidified, it actually forms solid bridges. These are minute solid bridges which you can see over here, and then a final granule or raspberry like structure is formed. एग्लोमरेशन के मैकेनिज्म में सबसे पहले बाइंडिंग होती है लिक्विड ड्रॉपलेट्स की और पाउडर पार्टिकल्स की. वेटिंग स्टेज के अंदर लिक्विड ब्रिजेस फॉर्म होते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये ब्लू लाइंस हैं, लिक्विड ब्रिजेस फॉर्म होते हैं. लिक्विड ब्रिजेस फॉर्मेशन के बाद ड्राइंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है और ड्राइंग की वजह से सॉलिडिफिकेशन होती है, यानी वाटर इवेपोरेट होता है, एंड दीज लिक्विड ब्रिजेस आर कन्वर्टेड इनटू सॉलिड ब्रिजेस और गैप कम हो जाता है बिटवीन पार्टिकल्स और पार्टिकल्स स्टिक करते हैं एक दूसरे के साथ. एंड फाइनली एक फाइनल ग्रैन्यूल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसे हम रेस्पिरेटरी लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं. यानी आपने डिफरेंट पार्टिकल्स को कंबाइन करके एक लार्जर एग्लोमेरेट में कन्वर्ट किया. इस डायग्राम के अंदर आपको ग्रैन्यूल फॉर्मेशन का मैकेनिज्म और मज़ीद डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है. यहाँ आप देख रहे हैं डिफरेंट पाउडर पार्टिकल्स हैं जिन्हें पी से अब्रीविएट किया गया है, और बाइंडर जो कि वेट ग्रैनुलेशन के केस में वेट बाइंडर है और ड्राई ग्रैनुलेशन के केस में ड्राई बाइंडर है. बाइंडर और पाउडर पार्टिकल्स प्रेजेंट. यहाँ वेट ग्रैनुलेशन एक्सप्लेन है तो वेटिंग का प्रोसेस है. वेटिंग के प्रोसेस में कंसोलिडेशन स्टार्ट होती है एंड दिस कंसोलिडेशन लीड्स टू न्यूक्लिएशन या स्प्रेडिंग. ठीक है. एंड देन देयर इज अ कोएलस, this coalesce to form a granule. Here you can see the coalescence between the agglomerates. These are two powder particles which are combined together by a binder. They coalesce together and they form a single agglomerate. Like coalescence, there are other techniques जिनसे हम agglomerate form कर सकते हैं, granule form कर सकते हैं. One is called as crushing और layering technique. इसके अंदर पाउडर पार्टिकल्स बड़े पार्टिकल के ऊपर लेयरिंग करते हैं स्मॉलर पार्टिकल्स और एग्लोमेरेट फॉर्म करते हैं. कोएलेसेंस टेक्निक के अंदर स्मॉलर पार्टिकल लार्जर पार्टिकल के साथ कंबाइन होता है, फॉर्म्स एन एग्लोमेरेट. देयर इज अनदर टेक्निक विच इज एब्रेशन ट्रांसफर एंड लेयरिंग. So I hope so कि इन डायग्राम से आपको mechanism of granulation कुछ हद तक क्लियर हो. So here in this example or in this method explanation, there is another technique which is being said, which is called sintering. Sintering, also known as frittage, is a thermal agglomeration process during which the atoms within the material diffuse and form bridges across distinct particles, joining them together. सिंटरिंग को हम फ्रिटेज भी कहते हैं और ये थर्मल प्रोसेस है, यानी हीट एसोसिएटेड प्रोसेस है, जहाँ पे एग्लोमरेशन प्रोसेस के दौरान एटम्स
मटेरियल के बीच में वो डिफ्यूज़ होते हैं और ब्रिजेस फॉर्म करते हैं। जिस तरह से अभी आपने थोड़ी देर पहले डायग्राम में देखा था, सॉलिड ब्रिजेस और लिक्विड ब्रिजेस फॉर्म हो रहे थे विदाउट थर्मल नीड या विदाउट थर्मल एनर्जी फॉर्म हो रहे थे। सिंटरिंग के अंदर थर्मल एनर्जी प्रोवाइड होगी तो एटम्स विद इन द मटेरियल डिफ्यूज होंगे और they would form bridges across distinct particles, thereby joining them together. And there is another method which is used for agglomeration, which is called as chemical reaction. That means there will be a chemical reaction between two particles and an agglomerate would be formed. Crystallization or disposition of colloidal particles will lead to the formation of agglomerate as well. Okay. Binding can also be achieved through adhesion and cohesion forces in highly viscous binders. Successful processing for the agglomeration of primary particles depends on proper control of the adhesional forces between particles which encourage agglomerate formation and growth and provide adequate mechanical strength in the product. Furthermore, the rheology of the particulate system can be critical to the rearrangement of particles necessary to permit densification of the agglomerate and the development of an agglomerate structure appropriate for the end-use requirement. प्राइमरी पार्टिकल्स की सक्सेसफुल एग्लोमरेशन डिपेंड करती है एडिशनल फोर्सेस जो बिटवीन द पार्टिकल्स हो रही हैं उसके प्रॉपर कंट्रोल के ऊपर। अगर एडिशनल फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स आर प्रॉपरली कंट्रोल्ड तो एग्लोमरेट फॉर्मेशन और ग्रोथ एडिक्वेट मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है टू द प्रोडक्ट। Rheology of the particulate system can also be critical to the rearrangement of particles which are necessary to permit densification of the agglomerate and the development of an agglomerate structure appropriate for the end-use requirement. Rheological properties particulate system की important है बिकॉज पार्टिकल्स की रीअरेंजमेंट परमिट करेगी डेंसिफिकेशन को एग्लोमरेट की एंड दिस विल इन टर्न इफेक्ट द स्ट्रक्चर विच वुड बी रिक्वायर्ड फॉर द एंड यूज रिक्वायरमेंट। If the particles are closed enough, then the surface forces such as van der Waals forces, which are short-range surface forces, and electrostatic forces can interact to bond particles. Decreasing particle size increases surface mass ratio and favors the bonding. अगर particles closely present हैं तो surface forces like van der Waals forces या electrostatic forces की वजह से bonding easily हो जाएगी particles के दरमियान and they would lead to agglomeration. लेकिन डिक्रीज पार्टिकल साइज इसी में अगर डिक्रीज पार्टिकल साइज है तो वो इंक्रीज सरफेस मास रेशियो प्रोवाइड करता है एंड इन टर्न बॉन्डिंग को फेवर करता है। van der Waals forces are 7-fold stronger than electrostatic forces and increase substantially when the distance between them is reduced, which can be achieved by applying pressure as in dry granulation method. van der Waals forces 7-fold stronger forces हैं than electrostatic forces के और substantially increase हो जाती हैं अगर distance between the particle is reduced. इसको हम easily अचीव कर सकते हैं by applying pressure, जैसे कि dry granulation method के अंदर हम प्रेशर अप्लाई करने के बाद कंप्रेशनल फोर्सेस अप्लाई करने के बाद ग्रैन्यूल फॉर्मेशन कर रहे हैं। उस ग्रैनुलेशन के अंदर एक्चुअली बॉन्डिंग फोर्सेस इंक्रीज हो रही हैं इस वजह से बिकॉज हम डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स को रिड्यूस कर रहे हैं ड्यू टू द कंप्रेशन दैट इज बीइंग अप्लाइड ऑन देम। The cohesive forces that operate during the moist agglomerates are mainly due to the liquid bridges that develop between the solid particles. Electrostatic forces keep particles in contact
long enough for another mechanism to govern the agglomeration process. The processing of drug substance with the excipients can be achieved without going through granulation steps by simply mixing in a blender. A directly compressible formulation can be processed and compressed in tablets or filled in the hard gelatin capsules. ड्रग सब्सटेंसेस और एक्सिपिएंट्स को विदाउट ग्रेनुलेशन प्रोसेस स्टेप से गुजारे हुए भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं बाय सिंपली मिक्सिंग इन ब्लेंडर या फिर डायरेक्ट कंप्रेशन टेक्निक्स के थ्रू. 1970s microcrystalline cellulose as a directly compressible vehicle was introduced. The compressible formulation containing microcrystalline cellulose is suitable for a number of products. This has several obvious advantages such as lower equipment cost, faster process time, and efficient operation involving only 2 process steps. Sometimes excipient cost may have to be compared against the savings in the processing steps and equipment by using alternate methods. 1970s में माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज इंट्रोड्यूस हुआ था एज अ डायरेक्टली कंप्रेसिबल व्हीकल. कंप्रेसिबल फॉर्मुलेशंस इनके अंदर माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है, वो सूटेबल है फॉर अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स और इसके बहुत सारे ऑब्वियस एडवांटेजेस हैं, जैसा कि लोअर इक्विपमेंट कॉस्ट अगर डायरेक्ट कंप्रेशन करते हैं यूजिंग माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज और एनी अदर डायरेक्टली कंप्रेसिबल व्हीकल, तो इक्विपमेंट कॉस्ट कम हो जाती है, प्रोसेस टाइम फास्टर हो जाता है बिकॉज वी आर मिनिमाइजिंग दी प्रोसेस स्टेप्स, और एफिशिएंट ऑपरेशन अकर होता है जिसमें एक्चुअली द होल ऑपरेशन इज ऑफ अ 2-step प्रोसेस. समटाइम्स एक्सिपिएंट कॉस्ट को हम कंपेयर करते हैं अगेंस्ट द सेविंग्स इन द प्रोसेसिंग स्टेप्स एंड equipment by using alternate methods. There are, however, a number of products that require low dose of drug substance where the blend uniformity and the content uniformity in the drug product are critical. Traditionally, the assessment of the blend uniformity is done after the blending process is complete. The required considerable delays in obtaining results and the sampling techniques and product discharge from the blender required consistency to obtain satisfactory results. बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनमें लो डोज ऑफ ड्रग सब्सटेंसेस रिक्वायर होती हैं, जहाँ पर ब्लेंड यूनिफॉर्मिटी और कंटेंट यूनिफॉर्मिटी क्रिटिकल पैरामीटर्स होते हैं. लाइक लो थेरेप्यूटिक इंडेक्स ड्रग्स के अंदर जहाँ पर लो डोज ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड है, वहाँ ब्लेंड यूनिफॉर्मिटी और कंटेंट यूनिफॉर्मिटी क्रिटिकल पैरामीटर्स हैं इन ऑर्डर टू प्रोवाइड दी अप्रोप्रिएट थेरेप्यूटिक dosage in drug formulation. Traditionally, assessment blend uniformity की after blending process की जाती है या blending process की complete होने के बाद की जाती है. अगर blending process के complete होने के बाद content uniformity या की assessment की जा रही है तो एक कंसिडरेबल डिले होता है इन ऑब्टेनिंग रिजल्ट्स, और जो सैम्पलिंग टेक्निक्स यूटिलाइज की जाती हैं या प्रोडक्ट डिस्चार्ज फ्रॉम द ब्लेंडर देखा जाता है, इसमें कंसिस्टेंसी रिक्वायर होती है टू ऑब्टेन सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स. However, the current interest in process analytical technology, PAT, online measurement of ingredient is possible. What is PAT? So PAT is actually process analytical technology. Is a system for designing, analyzing, and controlling pharmaceutical manufacturing processes through measurements of critical quality and performance attributes of raw and processed materials to ensure final product quality, the idea of which is to become more efficient,
while reducing over-processing, enhancing efficiency and minimizing waste. So PAT क्या है? PAT is a process analytical technology. ये एक सिस्टम है for designing, analyzing and controlling. यानी ये सिस्टम डिज़ाइन भी करता है, एनालाइज भी करता है और कंट्रोल भी करता है. एंड व्हाट डज इट कंट्रोल, एनालाइज और डिज़ाइन? फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस. इस तरह से करता है थ्रू मेजरमेंट्स ऑफ क्रिटिकल क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस एट्रीब्यूट्स ऑफ रॉ एंड प्रोसेस मटेरियल्स. और ये इंश्योर करता है कि फाइनल प्रोडक्ट क्वालिटी मेंटेन रहे. The idea of which is to become more efficient while reducing over processing. यानी आप किसी भी प्रोसेसिंग स्टेज के अंदर एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग या ओवर प्रोसेसिंग ना करें. It would actually enhance the efficiency of the process and it would minimize the waste. तो वो सारे पैरामीटर्स या वो सारे क्रिटिकल पॉइंट्स एक्चुअली नेसेसरी हैं ऐसी ड्रग्स में जहाँ पर लो डोजेज रिक्वायरमेंट है और ब्लेंड यूनिफॉर्मिटी और कंटेंट यूनिफॉर्मिटी. प्रोडक्ट में क्रिटिकल क्वालिटी पैरामीटर्स इन ऑर्डर टू मेंटेन द क्वालिटी एंड द यूनिफॉर्मिटी ऑफ द कंटेंट ऑफ द प्रोडक्ट. वहाँ पर पैट इज़ एन अप्रोप्रिएट kind of process which will actually reduce the over processing and it would enhance the efficiency by minimizing the waste. So there are frequently used granulation techniques and subsequent processing steps. जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि दो तरह की ग्रैनुलेशन मेथड्स हैं. वन इज कॉल्ड एज वेट ग्रैनुलेशन मेथड एंड द अदर वन इज कॉल्ड एज ड्राई ग्रैनुलेशन मेथड. वेट ग्रैनुलेशन मेथड के अंदर हम प्रोसेसिंग में लो शेयर मिक्सर्स यूज़ करते हैं, हाई शेयर मिक्सर्स यूज़ करते हैं, फ्लूइड बेड ग्रैनुलेटर्स या ड्रायर्स या स्प्रे ड्रायर्स यूटिलाइज करते हैं, एक्सट्रूजन और स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं वेट ग्रैनुलेशन करने के लिए, और कंटिन्यूस मिक्सर ग्रैनुलेटर को यूज़ करते हैं वेट ग्रैनुलेशन को अचीव करने के लिए. इन केस ऑफ लो शेयर मिक्सर the drying technique which is utilized is tray or fluid bed dryer, and in case of high shear mixer there are two types of drying technique which are utilized. One is called as tray or fluid bed dryer and the other one is vacuum or gas assisted or microwave assisted one pot drying. In case of fluid bed granulator, this granulator itself work as a dryer as well, minimizing the drying step in this process. Spray dryer again is utilized to combine the both processes. The one is wet granulation and the second step of granulation, which is the subsequent important step, that is drying. It is done in the same equipment as well. In case of extrusion or sterilization technique, we need to use a drying technique, for example tray dryer or fluidized bed dryer. Continuous mixer granulators के अंदर हम fluid bed drying करते हैं या फिर continuous या batch drying करते हैं. In case of dry granulation processes, the process may be either direct compression or slugging or roller compactor. There is a further process which requires like blending and milling or slugging of tablets and blending and then decompressing it, and then the process further compact, milled or blended process steps are further enhanced in case of low compaction technology or slugging method. So this was all about the introduction of granulation. In next class we will be starting with the spray drying. Thank you for patiently listening to this lecture. For your questions and queries, kindly use your HULMS portal. See you in next class. Meanwhile, take care of yourself and everyone around you. Allah Hafiz.